हॅलो. हा दोडमिनी सर, सुरू करायला हरकत नाही. हा सर, एकच मिनिट. हा बोला. Yes, अँकर मॅडम. good evening. A very good morning to all. Welcome to the webinar on intellectual property rights organized by IPR Committee and IQAC of Rajashri Chhatrapati Shahu College in collaboration with National IP Awareness Mission. Inventions and ideas can transfer the future forever. All innovation begins with simple idea or thought. From a simple thought, an idea can be built up and developed into fully functional invention, making the life easier for human beings. Today, more than ever, ideas has worked for more than its face value. Here comes the importance for intellectual property rights. It is a need of our to create awareness about the process related to IPR among the academicians, research scholars, students, and entrepreneurs. This webinar is organized to illustrate various aspects of intellectual property and rights associated with it. IPR Committee and IQAC of Rajashri Chhatrapati Shahu College has taken the initiative to organize this webinar to provide an insight about IPR. Now, I invite Dr. A.G. Todmani, sir, the Assistant Professor of Chemistry, to introduce about today's webinar. Yes, thank you, ma'am. Good morning. I, Dr. Anand Dodmani, Assistant Professor of Chemistry and the Program Coordinator of this national webinar,
welcomes you all in the national webinar on intellectual property rights. This national webinar jointly organized by IPR committee and the IQAC of Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur, in collaboration with National Intellectual Property Awareness Mission. Now it is very interesting to share a National Intellectual Property Awareness Mission was initiated under the government's Azadi Ka Amrit Mahotsav, and it has been launched by Sri Anurag Jain, Secretary of the Department of Industry and Internal Trade, on 8th December 2021. DIIT means Department of Industry and Internal Trade works for the growth of the industry sector and keeping in view of the national priorities and socio-economic objectives. NIPM means National Intellectual Property Awareness Mission works under DPIIT, that is Department of Industry and Internal Trade, Government of India, Office of the Controller General of Patents, Design. Sir, Department. can you, excuse me, sir, sorry to interrupt you. Can you mute the participants? Yes, Because yes, there ma'am. is a lot of noise. Yes, yes, ma'am. That is. So 1 minute plus, sir. All the Yes, sir. participants are humble request to mute your microphones. Please go ahead. Okay, sir. Actually, this National Intellectual Property Awareness Mission works under DPIIT, that is Government of India, and the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade, Trademarks, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. The aim of this mission is to provide awareness on intellectual property and its rights to 1 million students in India. It also aims to inculcate the spirit of creativity and innovation to students of the higher education, and also inspire the college and university students to innovate and to protect their creations. Since it is well known that the intellectual property rights are the rights given to persons over the creations of their minds. Hence, in this program, today's research person, Ms. Ujjwal Singh, ma'am, highlights the basics of intellectual property rights, protection of different IPRs, procedure of filing the different IPR applications, career opportunities of IPR in the field of government and private sector. So, in this brief introduction, so I request anchor Ms. Bote ma'am, please take the charge and continue. Over to you, ma'am. Thank you, sir. Now, I invite our Vice Principal, Professor Dr. V.V. Killedar, sir, to talk about Santha and college. Over to you, sir. नाही शाहू कॉलेज कोल्हापूर 2007 I am audible, sir. Hello. Yes, sir, you continue, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good morning to one and all. I, Dr. V.V. Killedar, Vice Principal of the college, welcomes the today's resource person, Ms. Ujjwal Singh, Examiner of Patents and Design, Patent Office, Mumbai. Coordinator of the workshop, Dr. Dodmani, National Vice. Hello.
Yes, sir, you are हे audible. बी केलं जातं. या फिजिक्सचा आहे. सर सर्व ऑडियन्सला म्यूट करा. अनिकेत the organizing IPR committee and IQAC of the college is organizing this webinar in collaboration with National IP Awareness Mission, Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Office of the Controller General of Patents, Design and Trademarks. Friends, it is my pleasure to introduce you with Rayat Shikshan Sanstha Satara and the Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur. Rayat Shikshan Sanstha, the mother institute of Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur, was established by late Padma Bhushan Dr. Karmavir Bhaurao Patil in the year 1919, which is one of the leading institute in Asia. The Sanstha has celebrated its centenary year in 2019. The value of its contribution to education in general is enormously great, as it has from the very beginning tried all the best to lay emphasis on the education of downtrodden, the poor and the ignorant that really form the major bulk of the society. Late Dr. Karmavir Bhaurao Patil was a man of masses who devoted all his mind and heart to the causes of their education. The institute's motto, education through self-help, speaks for its emphasis upon the dignity of labor and its social orientation. During the last 100 years or so, Rayat Shikshan Sanstha has proliferated to such an extent that today it runs 41 senior colleges, 2 B.Ed colleges, 1 engineering college, 1 law college. The Sanstha also runs 432 secondary schools, 25 primary schools, 36 pre-primary schools, 74 cosmopolitan hostels, 8 residential schools for Adivashi students, 6 industrial training institutes, 8 B.Ed colleges, 158 junior colleges, 7 regional offices, and 59 other branches. Total of 18,000 devoted staff serve in 14 districts of Maharashtra and 1 district in Karnataka to impart the knowledge to about 434,000 students. The budget of the Sanstha is about 3.5 billion rupees. Sanstha's 14 colleges are accredited with A grade by NAC. 6 colleges of the Sanstha has autonomous status. The outstanding work for the poor and deprived performed by the Sanstha in the spirit of the missionaries has been honored with Dr. Babasaheb Ambedkar Award, Government of India, Dalit Mitra Puraskar, Government of Maharashtra, Adarsh Shikshan Sanstha by Government of Maharashtra, Rajarshi Chhatrapati Shahu Puraskar, Kolhapur, Sadguru Gadge Baba Seva Puraskar, Mumbai, Dr. Panjabrao Deshmukh Smriti Puraskar, Akola. Now, I am giving you something information about my college. The Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur is established in year 1962. The college was named as Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur, in the memory of Rajarshi Shahu Maharaj of Kolhapur, a great social reformer of Maharashtra. The college has celebrated its golden jubilee year in 2011-12. Recently, our college is re-accredited with A grade with CGPA 3.07 in 3rd cycle by NAC. College is awarded with Karmavir Paritoshik in year 2015 by Rayat Shikshan Sanstha. Our college has established itself as a reputed institute providing quality education in the field of arts, commerce, science, and computer science to the students from slum area and deprived sections of the society. The college is known for its wrestling and kabaddi tradition and produced a number of sports persons at national and international level. College runs PG programs, the self-financial courses, career-oriented certificate courses, skill-based courses,
competitive exam center and vocational courses to facilitate the need of students. College has active placement and counseling cell for overall development of the students. Majority of the faculty is engaged in research and completed number of minor and major research projects. The college bears well-equipped laboratories and swimming tank of Olympic standard. With this brief introduction of Rayat Shikshan Sanstha and my college, once again, I welcome the today's resource person, Ms. Ujjwala Singh, and all the participants for this online national webinar. Thank you. Jai Karmavir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Now, I invite Dr. S.P. Pawar, sir, the head of the Department of Chemistry, to introduce the today's resource person. Good morning, one and all. It's my great pleasure to introduce today's resource person of this workshop, Ujjwala Jaipal Singh. Currently, she has working as an examiner of patents and design, Mumbai Patent Office, Department of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of Maharashtra. She has completed her MSc from IIT Delhi in 2017. Then she has cracked NET exam in July 2017. Then she has joined as a project at IIT Delhi, and she has handled project of hydrogen production in 17-18. She has worked as a scientist, in quality evaluation laboratory, Spices Board, Delhi in 1819. With this brief introduction, I request Ujjwala Jaipal Singh ma'am to deliver his talk. Thank you one and all. Thank you, sir. Good morning, everyone. I welcome you all on the IPR awareness program on the behalf of CGPDTM, Government of India. Sir, it's my pleasure and honor to invite you on the webinar conducted by CGPDTM under the banner of Azadi Ka Amrit Mahotsav. So I request all the participants to be attentive during the session. The main aim of this program is to motivate the students, to encourage the students how they can convert their ideas or into innovations and then further transform them into assets. So we will be discussing the basics of intellectual property rights so that in future students will be aware how they can protect their creativity or ideas. So I request all the participants to mute their audio and be attentive. I will ask questions because this is something that you will encounter in your day-to-day life. So intellectual properties, we all know, we just are not aware about it, right? So let's begin with the presentation. So I am sharing my screen. Just tell me whether it is visible or not. Is it visible, sir? The screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And I request all the participants to mute themselves so that there will not be any glitches during the presentation. And second thing is, I will ask some questions to the participants so that they will be attentive, right? So just be attentive and pay attention. Now, as we all know, our nation is celebrating 75th anniversary under the banner of Azadi Ka Amrit Mahotsav. So under this banner, there is a mission launched by the Government of India, which is called National Intellectual Property Awareness Mission. And in this mission, awareness should be conducted to the students. I think
1 lakh students within the span of 1 year. So the awareness will be on intellectual property rights. And let's begin with the presentation now. So first is the definition of intellectual property. In Hindi, it means बौद्धिक संपदा. हिंदी में इसे बौद्धिक संपदा कहते हैं. So it is very clear from its name only what is intellectual property. So it consists of two words, intellectual and property. So intellectual means that is coming out of human mind. So any property, कोई भी संपदा जो कि मनुष्य की बुद्धि से उत्पन्न होती है, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं. तो कोई भी आइडियाज, कोई क्रिएटिविटी, एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, it is termed as intellectual property. Now we all know they earlier we used to have different kind of properties. हम अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज को अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जैसे कि व्हीकल्स हो गए, लैंड्स हो गए, फार्म हाउसेस हो गए, बिल्डिंग्स हो गई. दिस ऑल आर टेंजिबल प्रॉपर्टीज. टेंजिबल मीन्स यू कैन टच देम, you can measure them, but can you measure the idea that is there inside a human brain? Can you measure the thinking process of a human brain? क्या आप कोई मनुष्य जो सोच रहा है उसका अमाउंट, can you fix that amount? Can you measure that amount? No, you cannot. So please mute yourself. So any kind of property which cannot be measured, which cannot be seen by our naked eyes, that is considered as intangible property. So basically हमारे पास दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं. एक होती है tangible properties और एक होती है intangible properties. So tangible properties वो हम बोलते हैं उन प्रॉपर्टीज को जिनको कि we cannot measure them. जैसे कि professors, teachers, they teaches you, doctors give services to you. So you cannot measure the courage or the hard work with which they are teaching you. So these all are considered as intangible properties. And again, the vehicles, cars, they are tangible properties. Now you can simply answer that, simply get to know that. Please mute, please mute, please mute. Okay, so now you can simply answer that the human ideas are intangible properties. So we can say that intellectual properties are intangible property as we cannot measure them. Sir, excuse me, sir. Yes, ma'am. Sir, I think the host can mute all the participants. Yes, ma'am. I will try. Yes, sir. Ours. You just unmute, ma'am. Yes, sir. Okay. So, तो कोई भी दूसरी प्रॉपर्टीज की तरह, बाकी प्रॉपर्टीज की तरह भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदाएं, ये हम खरीद सकते हैं, इनको हम बेच भी सकते हैं और इनको हम लाइसेंस और इनके फ्रेंचाइजेस भी कर सकते हैं. एंड इट कैन बी एक्सचेंज्ड, बट द मेन थिंग इज यू हैव टू कन्वर्ट योर आइडियाज इनटू सम एसेट्स. जब तक आप अपने आइडियाज को कोई एसेट में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक वो प्रॉपर्टी कंसीडर ही नहीं किया जाएगा. सो we have ideas, then we need to convert the ideas into some useful assets, and then it can be treated as a property. So intellectual properties are of two types. हमारे पास दो तरीके की intellectual properties होती हैं. पहली होती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से हमारा मतलब है वो प्रॉपर्टीज जो कि इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर की जा सकती हों हजारों करोड़ों की संख्या में. इनमें बेसिकली हमारे आते हैं पेटेंट्स जो कि इन्वेंशंस को दिए जाते हैं. उसके बाद आते हैं ट्रेडमार्क्स जो कि लोगोस
और सिंबल्स को दिए जाते हैं। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, जो कि डिजाइन्स या आउटर मोस्ट अपीयरेंस को दिए जाते हैं। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी, राइट। कॉपीराइट्स में हम लिटरेरी वर्क इंक्लूड करते हैं, नॉवेल्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, ये सभी कॉपीराइट्स के डोमेन्स होते हैं। Now today we will be looking at these five intellectual properties, which are patents, designs, trademarks, geographical indications, and copyright. So this is the overview of what are intellectual properties, what kind of intellectual properties are there. Now we need some rights. अगर आपने कोई creative work किया है, so it doesn't happen within blink of the eye, right? It requires lot of time and hard work. So you need to protect your property. जैसे आप कोई जमीन खरीदते हो तो आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी आपको बिलोंग करती है। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के केस में होता है। देयर आर सम राइट्स, कुछ हमें अधिकार दिए गए हैं, कुछ जो ऑनर है, जिसने कोई जो प्रॉपर्टी बनाई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको अधिकार दिए जाते हैं, जिनको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर is a collective term for intellectual property rights, which means the legal rights that result from intellectual activity in industrial, scientific, literary और artistic field. So कोई भी अधिकार जो कि आपको आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं, which results from human creativities, जो आपकी ह्यूमन क्रिएटिविटी का नतीजा है, वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, वो इंडस्ट्रियल फील्ड में हो सकते हैं, वो साइंटिफिक फील्ड में हो सकते हैं, वो आर्टिस्टिक फील्ड में हो सकते हैं, या वो लिटरेरी फील्ड में हो सकते हैं। उन प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लीगल राइट्स मिलते हैं ऑनर को या क्रिएटर को, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। सो द मेन ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है यहाँ से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, दे इंकरेज फेयर ट्रेडिंग। सपोज मार्केट में आपने कोई नया डिवाइस अभी लॉन्च किया है। आई होप आप में से कुछ बच्चों ने शार्क टैंक सीरियल देखा होगा, एक शो आता था शार्क टैंक। उसमें जो इनोवेटर्स थे, क्रिएटर्स थे, नए नए स्टार्टअप्स थे, वो अपने नए आइडियाज लेके आते थे। दे कैन बी इन एनी फील्ड। वो कोई कोई कुछ खाने के नए प्रोडक्ट्स लेके आता था और फिर बताते थे कि हाउ दैट प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर दैट इज देयर इन द मार्केट। कुछ शूज लेके आते थे, कुछ नए क्लोथ्स लेके आते थे। सो देयर कुछ नए डिवाइसेस लेके आते थे, कुछ फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज वर shown by the inventors on that show, that serial. So the main motive is, if you have anything new, it can be literary, artistic, or it can be a device, और मार्केट में जैसे ही आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, जैसे कि वेरी ट्रेंडिंग इज मोबाइल फोन, द आवर स्मार्टफोन इंडस्ट्री। तो जैसे ही कोई किसी मोबाइल में नया फीचर इन कोई कंपनी लॉन्च करती है, तो तुरंत देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन द मार्केट विच रन फॉर दैट फीचर। ठीक है, वो कॉपी करने लग जाएंगे उन फीचर्स को विदाउट द परमिशन ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर। ठीक है, वो सपोज किसी कंपनी ने डिजाइन किया, उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं कराया अपने नए फीचर को, देन विदाउट प्रोटेक्शन एनीबडी कैन कॉपी दैट कंपनीज आइडिया, और बिना प्रोटेक्शन के वो उस आइडिया को आराम से खरीदेंगे, अपने डिवाइसेस में लॉन्च करेंगे और बेच देंगे। सो हेयर कम्स द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो अगर आपके डिवाइसेस में आप कोई नया फीचर लॉन्च करते हैं, तो आप उसको प्रोटेक्ट करा सकते हैं बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और इस तरीके से मार्केट में एक फेयर कंपटीशन बना रहता है। देन एडवांसमेंट की फर्दर अपग्रेडेशन को भी सपोर्ट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सपोज आपने अपने आइडियाज प्रोटेक्ट कराए, देन प्रोटेक्ट कराने की वजह से सेकंड कंपनी कैन नॉट कॉपी योर आइडियाज, राइट, योर न्यू फीचर्स इन दैट डिवाइस।
वो नहीं कर सकते क्योंकि आपके फीचर्स प्रोटेक्टेड हैं. विदाउट योर परमिशन दे कैन नॉट कॉपी योर फीचर्स. So in that case, what they will do is they will try to work on that feature and they will come up with new feature that is different from the that feature that is developed by the previous company. तो इस तरीके से एडवांसमेंट का हमेशा एक तरीके से होप बना रहता है जब हम अपने आईपीआर के थ्रू प्रोटेक्ट कराते हैं अपने इन्वेंशंस को. So this is the utility or significance of intellectual property rights. So basically, intellectual property rights encourage fair trading. मार्केट में एक अच्छे ढंग से क्लियर तरीके से व्यापार हो, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सपोर्ट्स करते हैं, बढ़ावा देते हैं. सेकेंड थिंग इज कोई इनोवेशंस है, कोई क्रिएटिविटी है, कोई नए आइडियाज है, दे सपोर्ट देम. एंड व्हेन some rights are there to support these type of works, then you find that those countries are at the top level of the global index in terms of innovations and development. So जो countries इन सब rights को full informants से they enforce those rights fairly, so in those countries will find that they are more developed. So जिस कंट्री की इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस्ड है, you will find them they are most developed country in the world. So this is the significance and importance of intellectual property rights. Suppose आपने कोई नया नॉवल लिखा है, आपको उसको लिखने में, इन्होंने कोई नई कहानी लिखी है, आपको उसके लिखने में मे बी 1 साल लगा हो, 2 साल लगे हो, काफी टाइम लगता है कोई नॉवल लिखने में. तो इफ somebody come and किसी ने आपका वो नॉवल चुरा लिया और अपने नाम से पब्लिश करा लिया, तो आपका सारा वर्क इट गॉट वेस्टेड. वो सारा आपने जो काम किया है उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहेगी. तो ऐसी चीजों से बचने के लिए सबसे पहले हमें अपनी क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करा लेना चाहिए. इफ यू हैव दैट प्रोटेक्शन, अगर आप उसको प्रोटेक्ट करा लेते हो, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ लीगल डॉक्यूमेंट. तो आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट मिल जाता है. नाउ विद दैट लीगल डॉक्यूमेंट यू कैन प्रूव दैट दैट वर्क बिलोंग्स टू यू. लीगल डॉक्यूमेंट मिलने के बाद आप कहीं पे भी प्रूफ कर सकते हो कि वो काम आपका है और आप जिसने आपका काम चुराया है उसको यू कैन सू देम इन द कोर्ट. ठीक है. तो यही सिग्निफिकेंस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कि जैसे ही आप कोई काम करते हो और आप उसको प्रोटेक्ट करा लेते हो, तो अगर कोई इफ एनी वन इन द मार्केट ही इज सेलिंग योर आइडियाज, योर फीचर्स विदाउट योर परमिशन, यू कैन सू देम इन द कोर्ट, क्योंकि आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट मिल जाता है प्रूफ के तौर पर. सो द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज इट प्रोटेक्ट योर आइडिया. आपके आइडियाज को प्रोटेक्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. देन सेकंड थिंग इज इट एक्सक्लूड्स अदर. वो दूसरों को आपकी परमिशन के बगैर आपका काम कॉपी करने के लिए रोकते हैं. देन यू कैन यूटिलाइज दैट वर्क, कमर्शलाइज दैट वर्क एंड यू कैन अर्न फ्रॉम दैट. तो आपने जैसे नॉवल लिखा, आप उसकी बुक को पब्लिश कराओगे, फिर आप उसकी मिलियंस ऑफ कॉपी, सपोज वो पॉपुलर हो गया तो उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज मार्केट में सेल करोगे. सो दैट वर्क यू कैन अर्न फ्रॉम दैट वर्क बाय कमर्शलाइजिंग दैट वर्क. सो इस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके जो आपने मेहनत की है, जो द हार्ड वर्क यू डिड फॉर दैट वर्क, यू कैन अर्न फ्रॉम देम. सो आपकी मेहनत को एक फल मिलता है जब आप अपने आइडियाज को प्रोटेक्ट करा लेते हैं. So this is the whole list of significance of intellectual property rights. The first thing is it avoids duplication. जब आप अपने वर्क को प्रोटेक्ट करा लेते हो तो डुप्लीकेशन से बचता है. Then serve as an indicator of achievement in R&D institutions and encouragement for improvement of technology. जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आप प्रोटेक्ट कराते हो और तो दूसरी कंपनी विदाउट कॉपिंग योर आइडियाज वो उसी फीचर पे सम न्यू टेक्नोलॉजी के साथ
लेके आते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में एक डेवलपमेंट की फीलिंग और कंपटीशन बना रहता है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के चांसेस बरकरार रहते हैं मार्केट में। देन लेटेस्ट डेवलपमेंट, अगेन इट्स मीनिंग इज ऑलमोस्ट सेम। लेटेस्ट डेवलपमेंट के चांसेस मेंटेन रहते हैं इफ यू नो दैट अभी तो हम कॉपी करने की सिचुएशन में नहीं है, तो यू विल वर्क ऑन द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ दैट आइडिया। देन यू कैन ट्रांसफर, अगर आपने अपने सपोज मोबाइल में कोई नया फीचर लॉन्च किया है, सो यू कैन commercialize that feature and you can transfer। अगर आपने उसके राइट्स ले लिए हैं तो आप उस दूसरी कंपनी को एज अ ऑनर और एज अ फर्स्ट पर्सन ऑफ दैट प्रॉपर्टी यू कैन ट्रांसफर योर राइट्स। सो अगेन यू कैन क्लेम ऑल द रॉयल्टी। सो जो भी आपके एक्सपेंसिव लगे हैं, आई थिंक दिस हेयर वी हैव केमिस्ट्री फैकल्टी, सो आपने देखा होगा कि आप जब रिसर्च करते हैं तो बहुत महंगे महंगे केमिकल्स, बहुत ही एक्सपेंसिव केमिकल्स पे आप कोई प्रोजेक्ट करते हो। सो अगर आपका इन केस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा हो एंड इट इज कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और आप उसको इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करने के आप काबिल हो, आपका जो प्रोजेक्ट है, देन वंस यू गेट पेटेंट ऑन इट, सपोज आपने उसको पेटेंट के थ्रू प्रोटेक्ट करा लिया और आपको पेटेंट मिल गया, तो पेटेंट मिलते ही आप उसकी पूरी रॉयल्टी क्लेम कर सकते हैं। जो भी आपके रॉ मटेरियल में जो भी आपके रिसोर्सेज लगे हैं, you can claim all that royalty once you get your property protected. Then you can commercially exploit your idea without fear of copying and imitation. So these all are the significance of intellectual property rights. So I will start with the example. ठीक है, जैसे कि we all are using these mobile phones right now. I am giving presentations to you by video conferencing. So this is a device but there is some idea that is inside that device. हम ये सब devices use कर रहे हैं, मैं ये headphone use कर रही हूँ, आप laptop, कोई मोबाइल से मेरी वीडियो देख रहा होगा या ये लेक्चर सुन रहा होगा, कोई लैपटॉप से सुन रहा होगा। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस, बट ये डिवाइसेस किसी ह्यूमन आइडियाज पे बेस्ड हैं। इन डिवाइसेस के अंदर देयर आर सम ह्यूमन आइडियाज दैट इज एम्बेडेड inside these devices. So that idea is considered as intellectual property. So I think intellectual property की आपको basic definition clear है। So आप सब apps use करते होंगे मोबाइल्स में, we all uses apps, right? हम सबको पता है apps हैं, लेकिन do we know कि apps work कैसे करती हैं? So that idea, how do the app work, nobody knows about them, and that idea when that is embedded inside a device into a tangible form, that is considered as intellectual property. जैसे ही हमने आइडिया को एक डिवाइस में इम्प्लांट कर दिया, एक डिवाइस के अंदर डाल दिया, तुरंत वो एक तरीके की प्रॉपर्टी बन जाता है जिसको हम which we can commercialize, right? So let's begin with the first intellectual property which is copyright. तो हम कॉपीराइट से शुरू करते हैं, सबसे पहली जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। सो कॉपीराइट्स में आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे आजकल सब से पॉपुलर जो हैं वो कॉपीराइट्स के इश्यूज होते हैं कि विदाउट द परमिशन ऑफ द सिंगर और द ऑथर और द लिरिसिस्ट द पर्सन हैज क्रिएटेड और कॉपीड द आइडिया। सो कॉपीराइट are the rights that is given to the creator or the owner in the literary, artistic, musical, cinematographic and sound recording. So agar if you are good in singing or if you are creating your own poems, अगर आप अपनी कोई खुद की poems लिखते हैं या कोई नया song लिखते हैं या कोई नई कहानी लिखते हैं या कोई arts and crafts में if you are interested and that thing is new, और अगर आपकी वो जो आपने बनाया है अगर वो न्यू और ओरिजिनल है इन सभी फील्ड्स में, लिटरेरी में, म्यूजिकल फील्ड में, सिनेमेटोग्राफिक फील्ड में, देन साउंड रिकॉर्डिंग्स में, देन यू शुड प्रोटेक्ट योर वर्क बाय गेटिंग कॉपीराइट ऑन इट। तो अगर इन्हीं सब डोमेन्स में से अगर आप कोई काम कर रहे हो जो कि न्यू एंड ओरिजिनल है तो आप उसको कॉपीराइट्स के अंडर प्रोटेक्ट कराते हो।
So a copyrights, basically it gives the creator of the original work exclusive rights to it, usually for the period of time, limited period of time. Copyright doesn't cover ideas and informations itself, but the manner in which they are expressed. So copyrights में basically expressions आपके प्रोटेक्ट किए जाते हैं. जैसे मान लो महाभारत है, तो महाभारत के पहले भी सीरियल आते थे, अब नए फॉर्म में सीरियल आते हैं. तो बोथ दीज, क्योंकि पहले अलग तरीके से उसी सीरियल को एक्सप्रेस किया गया था, लेकिन अब अलग तरीके से. So mode of expression, if it is different, then those subject matters can be protected under copyrights. जैसे कि अभी मैं एक वीडियो आपको डिलीवर कर रही हूँ, so अगर कोई दूसरा इंसान यही वीडियो, यही सेम स्लाइड्स प्रेजेंट कर रहा है, यही सेम प्रेजेंटेशन दे रहा हो, लेकिन उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा मेरे वे ऑफ एक्सप्रेशन से. सो दीज बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, क्योंकि हमारा दोनों का एक्सप्रेसिव फॉर्म्स डिफरेंट है. सो वी कैन प्रोटेक्ट अवर expressions via copyright. So these all are aspects of copyright. Now what is covered under copyright? So this is very basic. तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज कहाँ प्रोटेक्ट करानी है, कौन सा काम कहाँ प्रोटेक्ट कराना है. तो अगर आप लिटरेरी वर्क में इंटरेस्टेड हैं, लिटरेरी वर्क, आई विल elaborate it further in my next slide what literary works are. Literary works, then films, then dramatic works, musical work, artistic work, and sound recording. These six domains are protected under copyright. And हम इसको और डिटेल में अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं. सो लिटरेरी वर्क में बेसिकली हमारे बुक्स आ जाते हैं. अगर आप कोई नई बुक लिख रहे हैं, जैसे कि कुछ बच्चों ने मेरी प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन पुटअप किया कि मैम जैसे हम हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं, तो अगर टू डिफरेंट ऑथर्स दे आर राइटिंग सेम हिस्ट्री, सपोज बायोग्राफी लिख रहे हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज पे, तो लेकिन दोनों का वे ऑफ एक्सप्रेशन तो डिफरेंट है, तो हम दोनों को ही कॉपीराइट्स के अंडर दोनों वर्क को ही प्रोटेक्ट करा सकते हैं. लेकिन अगर वो पूरी बुक ही कॉपी कर दी और आपने सेम नाम मतलब ऑथर चेंज कर दिया, तो वहां पे देयर इज इन्फ्रिंजमेंट केस, वहां पे वो कॉपी का इशू आ जाएगा. अदरवाइज अगर आप अलग अलग तरीके से सेम बायोग्राफी, क्योंकि हिस्ट्री में तो बायोग्राफी में तो सभी सेम चीज इंक्लूड होने वाली है, बट जैसे ही आप है तो वो वर्क आपका ओरिजिनल वर्क माना जाता है और उसको आप कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्ट करा सकते हो. देन लिटरेरी वर्क्स में न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, देन क्वेश्चन पेपर्स और देयर, देन कैटलॉग्स, डिक्शनरीज, computer software, computer programs, lyrics of the songs. So these all things are protected under copyrights. ठीक है, आप कोई गाना लिख रहे हैं, उसके लिरिक्स को आप कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्ट करा सकते हो. और देयर आर, ये जो एप्स होती हैं इनको आप प्रोटेक्ट नहीं करा सकते किसी और डोमेन के अंडर, ये सिर्फ कॉपीराइट के अंडर ही प्रोटेक्ट होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं. दीज आर द प्रोग्राम्स दैट इज रन, देयर इज एल्गोरिदम्स फॉर देम. सो एप्स हैं, दे वर्क ऑन सम एल्गोरिदम्स, सो दोज एल्गोरिदम्स आर प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट्स. सो अगर आपसे मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूं कि एप्स को कहाँ प्रोटेक्ट कराओगे, तो योर आंसर शुड बी एप्स आर नॉट प्रोटेक्टेड एज सच, बट देयर algorithms or their software programs, they are protected under copyright. So I will ask this question at the end of my presentation. Now another thing is artistic work. So if you are good in drawing, for example the Mona Lisa drawing, so that is original and that is completely new, and you might know its cost also, so that these all work, they are really good or creative. If these works are protected, that you can earn from that work. Then we have paintings, sculptures, engineering drawings, photographs, all these works can be protected under copyrights, but the main thing is the work should be
न्यू एंड ओरिजिनल, आपका काम नया और ओरिजिनल होना चाहिए. इट शुड नॉट बी द कॉपीड वन. Now another thing is which is protected by copyright is musical works. So musical works are also protected by copyrights. Musical work में भी आपके singers cannot have copyright. ठीक है, singers को कोई copyright as such नहीं मिलता है, but the person who is writing the lyrics, जो इंसान जिसने lyrics लिखे हैं उसको copyrights मिलते हैं, प्लस जो म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं, क्योंकि म्यूजिक की जो कंपोजिशंस होती हैं वी कैन express them on a paper, we can write them, so those things can also be protected under copyrights. Then there is another is thing that is broadcasters rights. तो आप देखते होंगे कि जो shows होते हैं they are on a particular channel, जैसे शार्क टैंक हो गया या कपिल शर्मा शो हो गया, आप उसको सिर्फ देखोगे कि वो सोनी टीवी पे ही दिखाई देते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोनी टीवी एक ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन ने कपिल शर्मा शो के राइट्स लिए हुए हैं. सो वी हैव ब्रॉडकास्टर्स राइट्स दैट विल हेल्प द ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रिवेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम airing that show. Then performance rights are there. जैसे आप देखते हो सर्कस करते हैं लोग, देन नुक्कड़ नाटक करते हैं, स्नेक चार्मर्स होते हैं, तो उनको भी राइट्स दिए गए हैं जो कि परफॉर्मेंस राइट्स कहलाते हैं और वो अपने वर्क को परफॉर्मेंस राइट्स के अंदर प्रोटेक्ट करा सकते हैं. Now comes another intellectual property that is industrial design. So अगर आपने कोई बुक लिखी है तो आप उसको कहाँ प्रोटेक्ट कराओगे? कॉपीराइट्स में. डोंट गो एंड फाइल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ बुक इन पेटेंट्स या डिजाइन्स या ट्रेडमार्क्स. ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप उसको कॉपीराइट्स के अंदर प्रोटेक्ट कराओगे. यू हैव टू पब्लिश योर वर्क. देन अनदर intellectual property is industrial designs. So as the name suggests, designs basically it is linked to the designer thing. आप देखते हो कि जो डिजाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं? They modify the shapes of the clothes. वो clothes की shapes बदलते हैं या कुछ नए तरीके के उनमें डिजाइन्स लेके आते हैं और इस तरीके से वो डिजाइन्स को मॉडिफाई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जो हैं वो उस डिजाइन को खरीदें. सो जब भी आप किसी भी आउटर मोस्ट एस्पेक्ट पे वर्क कर रहे हो किसी आर्टिकल के, तो आप या तो उसकी शेप चेंज कर रहे होते हो या उसमें कुछ पैटर्न्स डाल रहे होते हो या उसमें कुछ कलर्स अलग लगा रहे होते हो, तो आप बेसिकली उसके आउटर मोस्ट अपीयरेंस को जब चेंज करते हो तो ऐसे वर्क को आप डिजाइन्स के अंदर प्रोटेक्ट कराते हैं. So in short, industrial designs covers the ornamental and aesthetic aspects of the article that may be 3D such as shape or surface, or it may be 2D such as patterns or lines. So designs में आप outermost appearance को protect करते हो. For example, I have the mobile phone with me. So basically इसका अभी ये cover है, इसका background कैसा है? It is light brown in color. But you have seen different types of these covers in the market. So if you are coming up with new and original cover, then that cover, the shape of the cover, the design, it has some design on it, its color, its designs, its shape. So all these things are protected by a copyright and protected by industrial designs, and these designs should be capable of manufacturing in industry. ठीक है, सो आप इन डिजाइन्स को किसी भी आर्टिकल पे अप्लाई कर सकते हो. आप इनको वॉचेस पे, ज्वेलरीज पे, फैशन एंड लग्जरी आइटम्स पे, देन मेडिकल इम्प्लीमेंट्स पे, हाउसवेयर पे, फर्नीचर्स पे, यू कैन अप्लाई एनीवेयर. सो इट अ वेरी गुड एग्जांपल इज, पहले हमारे पास नॉर्मल चेयर्स होती थी, नॉर्मल चेयर्स, बट देन देयर इज अ बम चेयर, you can see over here, and ये इतनी पॉपुलर हुई कि आप देखोगे कि आजकल हर किसी
नर्सरी स्कूल में या प्ले स्कूल में आपको इसी तरीके की चेयर्स रखी हुई मिलती है. व्हाई? बिकॉज इट इज समथिंग न्यू, something different. So its shape is different, its color is different. So all these aspects are protected via industrial designs. So in short, अगर आप कोई आर्टिकल है आपके पास और आप उसकी शेप को, कॉन्फ़िगरेशन और पैटर्न्स को चेंज करते हो तो आप उसको इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर प्रोटेक्ट करा सकते हो. देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आपको फुलफिल करनी होती है when you are filing for the protection of designs. These conditions are आपके designs नए होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए. ये these should appeal to the eye of customer. ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने चाहिए. अगर आप मार्केट में ऐसा कोई डिजाइन लेके आते हैं जो कि ऑलरेडी नोन है तो क्या उसकी कोई वैल्यू होगी, कमर्शियल वैल्यू? नो, इट शुड नॉट बी समथिंग न्यू. ज्यादा कस्टमर्स उसको बाय करने, खरीदने नहीं आएंगे, क्योंकि कस्टमर्स को क्या चाहिए? कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि नया हो. आप भी जब कोई मूवी देखने जाते हो या कोई कपड़े खरीदने जाते हो तो आप चाहते हो कि कुछ तो नया हो उसमें. सो इन द सेम वे प्रोटेक्शन भी हम नई चीज को देते हैं या ओरिजिनल वर्क को देते हैं ताकि इट हैव सम वैल्यू. नाउ इंडस्ट्रियल डिजाइन, फॉर एग्जाम्पल, आप, there are normal bottles, but then some people come with different shapes, different colors. So by this way they are enhancing the outermost appearance of that bottle. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे varieties of bottles हैं with different shapes and colors. So अगर आप मार्केट में इस तरीके का कोई डिवाइस देखते हो, it can be anything. अगर आप मान लो कोई शूज देखते हो और आपको लगता है कि अगर इस तरीके की शेप हो या इस तरीके का ये शूज का पैटर्न हो या कलर हो तो it will be different and more customers will buy it. So you can go and work on that shape. It can be applied on devices. For example, mobiles में भी आप यही shapes change कर दे. और आपने देखा होगा कि अगर सेम ब्रांड, एवरीथिंग इज सेम, सेम मॉडल का कोई मोबाइल फोन है लेकिन उनकी बैक जो बॉडी है वो डिफरेंट कलर की है तो उसी मोबाइल के डिवाइस के प्राइस में फर्क आ जाता है. देयर इज डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ दैट मोबाइल डिवाइस. सो व्हाई इज दैट? बिकॉज उसकी आउटर मोस्ट अपीयरेंस उस कलर की वजह से इनहेंस हुई है. और जैसे ही आप इनहेंसमेंट लाते हो ड्यू टू आउटर मोस्ट अपीयरेंस, अगेन इट इज कंसिडर्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. वो एक तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बन जाता है जिसको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है. अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन नंबर. अगर आपको ये साइन दिखता है कहीं पे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ तो इसका मतलब है वो डिजाइन प्रोटेक्टेड है. ये डिजाइन आपको, ये साइन आपको हर एक आर्टिकल पे देखने को मिलेगा. केवल कुछ ही आर्टिकल्स ऐसे हैं जैसे कि टेक्सटाइल आर्ट और ब्रिटल आर्टिकल्स जिन पे आपको ये नंबर और साइन देखने को नहीं मिलता. सेकेंड थिंग इज, अगर आपके डिजाइन प्रोटेक्टेड हैं तो आप रोक सकते हो किसी सेकेंड पर्सन को आपके आइडियाज को कॉपी करने में और कमर्शलाइज करने से. नाउ अनदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ट्रेडमार्क्स. आई थिंक इंडस्ट्रियल डिजाइन्स और कॉपीराइट्स में आपको डिफरेंस क्लियर है. सो आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर. The question is, if there is a sculpture that is created by the artist, अगर किसी आर्टिस्ट ने कोई स्कल्पचर बनाया है तो उसको प्रोटेक्शन कहाँ मिलेगी? इंडस्ट्रियल डिजाइन्स में या कॉपीराइट्स में? Now participant, one of the participant can mute themselves, or if they are not able to unmute, then they can write in the chat box. कोई स्कल्पचर या पेंटिंग है तो आप उसको कहाँ प्रोटेक्ट कराओगे? डिजाइन्स में
या कॉपीराइट्स में? स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स, कॉपीराइट्स में. एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर आंसर? Copyrights. Sculptures or paintings are protected in copyright. Okay, any other answer? Copyright. Any other? Now, can you explain why the sculptures or paintings are protected in copyrights? I have asked this answer question because most of the participants do this, get confused between copyright and designs. Designs, right? Any other answer? Any other? तो स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स आपने बोला है कि आप डिजाइन्स में प्रोटेक्ट कराओगे. ओके, कॉपीराइट्स में सिर्फ एक आंसर है जो डिजाइन्स में कह रहे हैं, बाकी सब कह रहे हैं कि कॉपीराइट्स में. सो आई वांट टू इलैबोरेट ओवर हियर कि कॉपीराइट्स आर नॉट इंडस्ट्रियल राइट्स. जब भी आप डिजाइन्स की बात करते हैं, जब हम पहले हमें देखना है नंबर्स. तो जब हम शेप्स की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी मोबाइल मैन्युफैक्चर किया है, उसके मैंने डिफरेंट कलर्स मैंने उस पर अप्लाई किए हैं उसकी आउट बॉडी पे. सो वो मोबाइल इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड मोर देन 15 नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है. या फिर कोई बॉटल ले लीजिए, मैंने बॉटल की शेप चेंज की है और मैं उसको मैंने वो शेप का डिजाइन दे दिया है, वो इंडस्ट्री में चला जाएगा, मैन्युफैक्चर हो जाएगा. एक बार दिया, वो हजारों की संख्या में मैन्युफैक्चर हो जाएगा. सो इंडस्ट्री में अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर हो सकती है, कोई शेप जो आपने डिजाइन बना के दे दिया और आपने वो डिजाइन दे दिया और वो मैन्युफैक्चर हो गया, सो दैट इज प्रोटेक्टेड बाय डिजाइन्स. बट एक बात बताइए, किसी ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है, किसी आर्टिस्ट ने, उस मोनालिसा पेंटिंग की यूनिकनेस क्या है कि वो आर्टिस्ट ने अपने हाथ से बनाई है. क्या उसको रिक्रिएट किया जा सकता है? इट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड. अगर आप उसको इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करने के लिए दोगे तो उसकी वो इंपॉर्टेंस रहेगी ही नहीं, वो हाथ से ही बनाई जा सकती है. सो अगर ऐसी तरीके की चीजें हैं, इफ दैट काइंड ऑफ वर्क इज देयर, सो दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट. ठीक है. कॉपीराइट में वो वर्क प्रोटेक्ट किया जाता है जिसको रिक्रिएट. अगर कोई स्टोरी लिखी है तो आप उस स्टोरी को रिक्रिएट, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट? सो जो स्कल्पचर्स हैं या कोई पेंटिंग है, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट. वो कॉपीराइट्स के थ्रू प्रोटेक्ट होंगी. लेकिन अगर आप किसी आर्टिकल पे, किसी गैजेट पे कोई शेप या साइज उसका चेंज कर रहे हो तो वो डिजाइन्स के अंडर प्रोटेक्ट होगा. तो देयर शुड बी क्लैरिटी. तो अगर आपसे कोई फ्यूचर में पूछे कि पेंटिंग्स को कहाँ प्रोटेक्ट कराओगे, तो यू शुड टेल कि पेंटिंग्स आर प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट and the thing that can be applied on articles that is protected under design. So the right answer of sculptures and painting is copyright. Don't get confused between copyright and design, otherwise आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी अगर आप गलत जगह जाके गलत फीचर को प्रोटेक्ट कराओगे और फिर आप सोचोगे कि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुई. ठीक है. Then comes another intellectual property, which is trademarks. So the answer was right for those who answered copyright. ठीक है. Now comes trademarks. So आपने विचार बनाने के लिए वो कंपनी कुछ अपने लिए वर्ड्स या सिंबल्स यूज करती है.
नई नई कंपनीज, नए नए स्टार्टअप्स, दे यूज सम डिफरेंट सिंबल्स और logos to represent their company in the market, and that logo is directly linked to the quality of the product that is coming out of that company. ठीक है, तो वो logos, वो symbols, these are the subject matter of trademarks. उन logos को, उन symbols को हम trademark के through protect कराते हैं. So in very basic terms, trademarks are the symbols that help the consumer to distinguish between competing goods or services that are major part of the goodwill of a company that enjoy in the trade. So इस तरीके से कंपनीज को ट्रेडिंग में बेनिफिट मिलता है, राइट? सपोज आपके पास दो शूज हैं, एक पे लिखा हुआ है एडिडास और एक पे लिखा हुआ है एबिबास. सम माइन्यूट स्पेलिंग चेंज इन द स्पेलिंग, उनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज हुआ है, और आपको कोई दोनों का बराबर प्राइस पे वही शूज दे रहा है, तो आप तुरंत पकड़ जाओगे कि नहीं, ये तो अलग ब्रांड का है, हम इसका इतना प्राइस पे नहीं करेंगे. तो इस तरीके से जो लोगोस होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, दैट विच रिप्रेजेंट कंपनी इन द मार्केट, एंड दैट कंपनी इज प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडमार्क्स. दैट सिंबल्स, दैट लोगोस दैट आर प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडमार्क. ठीक है, तो basically trademarks are the sign that are capable of distinguishing the good or services of one enterprises from those of the other. These are the examples of the logos and symbols or the word marks. So you can write in the chat box the name of some car brands. I request the participants to name some of the car brands. है यस. तो आप कई बार आप कार का नाम नहीं पढ़ते हो, लेकिन आप पता कर लेते हो कि ये उस ब्रांड की कार है, उस कंपनी की कार है. तो हाउ डू यू नो? उनके कुछ लोगोस होते हैं, लोगोस. सो ऑल दीज थिंग्स वो कंपनी ने प्रोटेक्ट कर रखे हैं, वो लोगोस उन पर्टिकुलर कंपनीज के प्रोटेक्ट किए हुए हैं, और जैसे ही वो प्रोटेक्ट करा लेते हैं तो कोई और कंपनीज उन लोगोस के साथ अपने गैजेट्स को बेच नहीं सकती है. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटेक्शन. नाउ हम ट्रेडमार्क्स में क्या क्या चीजें प्रोटेक्ट करा सकते हैं? ब्रांड नेम्स एंड टैगलाइंस, देन सर्टिफिकेशन मार्क्स, देन साउंड मार्क्स, लोगोस, olfactory smell scents and moving marks. हम इन सब चीजों को हम ट्रेडमार्क्स के अंडर प्रोटेक्ट करा सकते हैं. बेसिकली आप अपनी कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो सब डोमेन्स यू कैन गेट देम प्रोटेक्टेड इन ट्रेडमार्क्स. वी हैव साउंड मार्क्स ऑल्सो, जैसे टिंग टिंग टिडिंग. अगर आपको ये नाम सुनाई देता तो आप तुरंत कैच कर लेते हो कि इट बिलोंग्स टू ब्रिटानिया कंपनी. So there are certain conditions again, अगर आपको अपना ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन चाहिए. So your logos, symbols और word marks, they must be graphically represented. Now यहाँ पे फिर से confusion आएगी. I will ask a question, then you will be able to distinguish between the domains of the work under which you can get protection. The first thing is trademarks should be graphically represented. ट्रेडमार्क्स जो हैं वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के कैपेबल होना चाहिए. सेकेंड थिंग इज इट शुड बी डिस्टिंक्टिव, वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए. इट मस्ट नॉट बी डिस्क्रिप्टिव. आपको सपोज आपकी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपको पूरा लिखना नहीं है उसमें कि इट शुड बी ऑफ कॉटन और नायलॉन और समथिंग एल्स. यू हैव टू गिव अ स्मॉल name or word or logo to that company. Then it must not be deceptively similar to the known marks. वो किसी well known brand के similar नहीं होना चाहिए.
जैसे एडिडास का आप एबिबास बना के मार्केट में बेच रहे हो तो यू कैन नॉट गेट प्रोटेक्शन ऑन एबिबास, आपको वो ट्रेडमार्क्स के अंदर रजिस्टर नहीं होगा एबिबास। जैसे ओआरएस है मार्केट में और आप अपना कोई इलेक्ट्रोलाइट ORL या ORZ के नाम से बना के बेच रहे हो, देन अगेन यू कैन नॉट गेट प्रोटेक्शन ऑन ORL और ORZ because that name is already present in the market. So the main idea is your work should be original and not similar to well-known designs or logos. Now for GI, I have a video. I will run that video, then it will be more clear to you when I show you the video. So now in trademarks, I told you ki they are, for example, they are graphically represented and they should be graphically represented and they should be new and original. So let me show you some examples. So suppose this Adidas is there, it is a graphically represented thing. Then this Jaguar is there. So all these two things, I told you कि ये these are protected by under trademarks. ऐसे ही ये सिंबल है, ऐसे ही ये है, ऐसे ही ये है, ये तीन सिंबल्स हैं. So कैन दे बी प्रोटेक्टेड इन कॉपीराइट? क्या आप उसको कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्ट करा सकते हो? इनको ट्रेडमार्क मिला है तो इसका मतलब ये न्यू है, ओरिजिनल है. यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. आई हैव अ क्वेश्चन कि क्या ये जो दीज आर अ काइंड ऑफ पेंटिंग, आर्टिस्टिक वर्क है ये दोनों, तीनों चारों, तो क्या ये कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्ट कराए जा सकते हैं? कैन यू प्रोटेक्ट them in copyright? Please write in the chat box. I request the participants to. Okay, I got one answer. It is yes. Another answer. Please write quickly. Quickly answer the question. We have to wind up in 15 minutes. ये लोगो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये ग्राफिकल मार्क्स हैं, ये मैकडी का सिंबल है, क्या आप इनको कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्ट करा सकते हैं? फटाफट प्लीज आंसर. No. Yes. Okay. Any other answer? I will wait for 1 more minute, then we will continue. Okay. So I have more no answer than yes. Now my question is, हम इनको क्यों नहीं करा सकते? अगर ये ओरिजिनल है, नए हैं, तो कॉपीराइट में हम वे ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करा रहे हैं. पेंटिंग है ये एक तरीके का, ये आर्टिस्टिक वर्क है. ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स आर प्रोटेक्टेड इन कॉपीराइट. तो अगर आप ऐसा कोई लोगोज या सिंबल्स डिजाइन करते हैं तो आप उसको दोनों में प्रोटेक्ट करा सकते हो, ट्रेडमार्क्स में भी और कॉपीराइट्स में भी. आप एक ही प्रॉपर्टी पे यू कैन हैव मोर प्रोटेक्शन, राइट? So you can get them protected in copyright as well as trademarks. आप दोनों में ही इसको प्रोटेक्ट करा सकते हो, but the only condition is the work should be new and original. लेकिन आप एडिडास को नहीं करा सकते. जैसे इसमें एडिडास लिखा हुआ है, what is this? You cannot protect it under copyright.
Now comes the GI indication. So I'm explaining very briefly to you कि GI indications में आप वो goods protect कराते हैं जो कि अपने लोकेशन की वजह से जिनमें यूनिकनेस आती है. जैसे कि आपने देखा होगा कि oranges from Nagpur are very famous. Why? Because the geographical condition over there is such that their taste get something unique feature. So that uniqueness of taste or that texture makes the oranges special because of that location, and then they become the subject matter of geographical indication, and that should be protected. Now I have a video. I request to listen to them carefully. Is it audible, the video? No, ma'am. Slide You are is not- visible, but audio is not. Wait a minute, sir. Wait a minute. Now it is. Yes, ma'am. Yes, yes. चिंदी चोर के साथ घमासान के बाद अब आईपी नानी बिजी हो गई अपनी पोती की शादी की तैयारियों में. संगीत वाले दिन जब छोटू उनसे मिला तो वाओ नानी, आप तो बिल्कुल छाए हुए हो. आपके सामने तो मधुबाला को भी कॉम्प्लेक्स हो जाए. ओए, मस्का लगाना बंद कर. ये बता तुझे क्या चाहिए? नानी, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया. क्या एक प्यारा सा लाडला सा बच्चा अपने नानी को कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकता? अच्छा चल, एक्सेप्ट किया तेरा कॉम्प्लीमेंट. अब बता तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी हाथ की वो स्पेशल वाली चाय पीनी है. बस इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा मस्का? मस्का नहीं नानी, आप आज सचमुच बहुत ही रॉकिंग लग रही हो. ये साड़ी आप पर बहुत ही अच्छी लग रही है. अरे ये तो स्पेशल लखनवी चिकनकारी है. लखनवी चिकनकारी पूरी दुनिया में मशहूर है. ये अपनी खूबसूरत और बारीक एम्ब्रॉयडरी के काम के लिए फेमस है. लेकिन पता है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? क्या है? ये एक रजिस्टर्ड जीआई है. जीआई? वो क्या होता है नानी? जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस. हिंदी में जिसे भौगोलिक उपदर्शन कहते हैं. ये किसी समुदाय का बौद्धिक अधिकार है. वो विरासत जिन्हें प्रोटेक्ट और एनकरेज करने की बहुत आवश्यकता है. मुख्यतः इन टाइप्स में रजिस्टर्ड होती है: नेचुरल गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फूड स्टफ. अच्छा. चल अब ना किचन में चलते हैं और गर्मा गर्म चाय बनाते हैं. हाँ हाँ हाँ. किचन की ओर जाते हुए नानी ने छोटू को अपना देश घुमा दिया. छोटू, जी नानी. ये देख, ये पेंटिंग देख. ये एक मधुबनी पेंटिंग है, बिहार की. और ये है हिमाचल की कांगड़ा पेंटिंग. तेरे नानू को देश की कला और संस्कृति से जुड़ी हुई चीजों को इकट्ठा करने का बहुत शौक है. अच्छा. ये कठपुतलियाँ देख रहा है? हाँ. ये राजस्थान की हैं. इसी तरह छत्तीसगढ़ से बस्तर ढोकरा, आंध्र प्रदेश से तिरुपति लड्डू, असम से मूगा सिल्क, नागालैंड से नागा मिर्च और मध्य प्रदेश के बाघ प्रिंट. ये सब रजिस्टर्ड जीआईज हैं. ओके. ये हमारे देश की कला और संस्कृति का प्रतीक हैं. हमारे देश में हुनर और कला का इतना भंडार है कि अभी से ही 300 से ज्यादा रजिस्टर्ड जीआईज हैं. वाओ नानी. चल अब तू चाय बनाने में मेरी मदद कर.
एक बर्तन में पानी ले और उबालने के लिए रख। यस बॉस। पता है छोटू, तुझे मेरे हाथ की चाय इतनी पसंद क्यों है? क्यों है नानी? क्योंकि ये है जो 2004 में रजिस्टर्ड हुई थी। लेकिन नानी एक बात बताओ, इन जीआईएस से फायदा क्या होता है? देखो छोटू, ज्यादातर जीआईएस गांव के समुदाय के होते हैं। इनसे कारीगरों, बुनकरों, किसानों की आमदनी बढ़ती है। उनको अपनी मेहनत का सही दाम मिलता है और उन वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ती है। साथ साथ खरीदने वालों को भी विश्वास हो जाता है कि वो एक जेन्युइन चीज खरीद रहे हैं। ओह, वैसे नानी मुझे एक आइडिया आया है। अरे वाह छोटू, तेरे को आइडिया? यस नानी, अगले महीने फॉरेन से मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। क्यों ना मैं उन्हें हमारे देश के कुछ सुंदर जीआई प्रोडक्ट्स गिफ्ट में दूं? ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है छोटू। उन्हें ये चीजें जरूर पसंद आएंगी और हमारे देश की कला का नाम भी होगा। देखा नानी, आपकी संगत में मैं कितना इंटेलिजेंट हो गया हूँ। हाँ भाई, ये बात तो है। So, is the screen visible, sir? Hello? The screen is visible now? Yes, it is visible, ma'am. Okay. Yes, ma'am. सो जीआई का आपको पता ही चल गया होगा। तो अगर लोकेशन की वजह से आपके किसी प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी आ जाती है जो कि वह अपने आप में एक अलग क्वालिटी हो जो आपको कहीं और ना देखने को मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे गुड्स को यू कैन प्रोटेक्ट देम अंडर जीआई। एंड वन मोर थिंग इज, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, नागपुर ऑरेंजेस। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट डू कल्टिवेट ऑरेंजेस। सो जीआई इज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड नॉट द इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, आपको बाकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है उस पे एक the individual person can get protection on it or a group of person can get protection on it. लेकिन GIs में only the group of people are able to register for GI. ठीक है, ग्रुप्स में आप GI के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सेकेंड थिंग इज, आपने there is a another thing that is worldly painting. So GIs केवल आपको वेजिटेबल्स पे या फ्रूट्स पे ही नहीं, बल्कि you can get the GI tag on the paintings, the work that belongs to some location. जैसे राजस्थानी कठपुतलियां हो गई, so that कठपुतली वो सिर्फ राजस्थान में ही, वहां के कल्चर में ही पाई जाती हैं, वहां के लोग ही उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो किसी लोकेशन की वजह से कोई चीज जब फेमस होती है तो उसको हमें जीआई के अंडर रजिस्टर कराना चाहिए। एंड द मेन थिंग इज हाउ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि आप देखते हो कि टूरिज्म को कितना इंपॉर्टेंस मिलता है। जैसे हमारी जो इम्पोर्टेंस है, पॉपुलर किसी लोकेशन की वजह से पॉपुलरिटी आई है, तो वो टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। वो चीजें, लोग बाहर से आएंगे तो राजस्थान में जाएंगे तो कठपुतलियां जरूर खरीद के जाएंगे, या वो जो उनके शोज होते हैं वो जरूर देख के जाएंगे। अगर कोई आसाम में जाता है तो वहां की चाय जरूर खरीदता है। सो इस तरीके से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और दूसरी, इस तरीके से हमारे कल्चरल जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो बरकरार रहती हैं। एंड देन व्यापारी, अगर आप ऑरेंजेस की बात करें या कोई फूड स्टफ की बात करें या फ्रूट्स की बात करें, तो वहां के ट्रेडिंग में, वहां के जो समुदाय हैं उनको फायदा होता है व्यापार में। So this is the significance of geographical indications. Now these are some examples कहाँ कहाँ के गुड्स को geographical indications टैग मिले हुए हैं, जैसे कुर्ग ऑरेंजेस, एंड देयर इज वेरी वन फेमस ऑरेंजेस दैट इज अल्फोंसो, जिसको हापुस भी बोलते हैं। अभी गर्मियों में आपको मिलेगा वो मार्केट में। उसके प्राइस आप देखिए कितने ज्यादा हैं। तो जीआई टैग मिलने के बाद आपके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे आप नॉर्मल चावल खरीदोगे तो वो कम प्राइस में मिलता है, लेकिन अगर आप बासमती राइस खरीदते हो तो उसके दाम थोड़े ज्यादा होते हैं।
तो इस तरीके से लोकल कल्टीवेटर्स को या ट्राइबल कल्टीवेटर्स को थोड़ा फायदा होता है. Now comes the very important intellectual property, which is patents. And patents are given to the inventions. ठीक है. I think geographical indications के में आपको clarity आई होगी. Now we have patents. So patents are given to the inventions, and it is one of the oldest form of the intellectual property that is started in 1700s. The main aim of the patent system is to encourage the economic and technological development by rewarding the intellectual activity. So main aim है patents का encourage करना technical developments को या economical developments को for rewarding the intellectual activity. Now a very good example is, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल now everybody in the world is facing the COVID situation, and you know that no mask or is 99 या 100% effective against that COVID situation. So if you are coming up with some new texture of the mask that is eco-friendly as well as that is 98% या 100% protective against the viruses, then you can get patent on it. So, and you know the waste, the PPE waste, there is a lot of PPE waste that is generating because of this COVID and manufacturing of enough number of masks and PPE kits. So this is a problem because it cannot be decomposed easily. So if you are coming up with the cloth material or mask with some new features, advanced features, that it is solving both the problems, the virus wali problem as well as the cloth material problem, biodegradability problem. So you can have such kind of ideas, you can work on these kind of ideas, and you can file for their patents. So patents basically is the intellectual property rights relating to the inventions. Patents आविष्कारों को दिए जाते हैं. पेटेंट्स को हम हिंदी में एकस्व भी बोलते हैं, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एकस्व यानी एकाधिकार. तो जैसे ही आप अपने डिवाइसेस को, अपने आविष्कारों को पेटेंट्स दिलवा देते हैं, तो आपको अपने आविष्कारों पर एकाधिकार मिल जाता है. नाउ एकाधिकार किस टर्म में आप उसको यू आर द ऑनर, आप उसकी पूरी रॉयल्टी क्लेम कर सकते हो. आप जिसको चाहे, यू आर द पर्सन हु हैज राइट्स टू कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिवाइस और द इन्वेंशन. यू हैव द कंट्रोल टू एक्सचेंज द डिवाइस, यू हैव द कंट्रोल टू सेल द डिवाइस. सारे एकाधिकार आपको मिल जाते हैं जैसे ही आप अपनी इन्वेंशंस को पेटेंट्स के थ्रू प्रोटेक्ट करा लेते हैं. नाउ पेटेंट्स मिलेगा किस इन्वेंशन को? दिस इज द मेन क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि आप सेम चीज, कोई पुराना फीचर लेके आ रहे हैं, कोई पुरानी इन्वेंशन है विच इज वेरी नोन, वेरी जनरल और कॉमन इन्वेंशन, एंड यू आर फाइलिंग फॉर इट्स पेटेंट एंड यू आर कंसिडरिंग कि आपको पेटेंट्स मिल जाएगा उस इन्वेंशन पे. सो यू आर रॉन्ग. सो इन those cases patents are given to the invention that is novel. या तो वो नई होनी चाहिए, या फिर वो इन्वेंटिव हो, या दोनों हो, और वो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करने के कैपेबल हो. नाउ कम्स that patents are given to the discoveries and not patents are not given to the discoveries, they are given to the inventions. ठीक है, discoveries को नहीं दिए जाते हैं. जैसे आप most of the participants, I think you are from chemical background, so अगर आप कोई डाई निकाल के ला रहे हो किसी प्लांट से, and you are saying that okay, I want to get patent on the dye. So dye is something that is there naturally in the plant. ठीक है, तो you cannot get patent on the thing that is there naturally. So patents are not given to the natural things. This is considered as a discovery. But if you are extracting dye and you are making some cosmetic out of that dye or anything,
if you are modifying or working with that die, that there is some human intervention, either you are making some cosmetics out of it by use of it, then it is considered as the subject matter that can be patentable. ठीक है? तो you cannot get patent on discoveries but on inventions. So there is one very good example is the first Indian patent was given to Alfred D. Penning for his efficient pankha pulling machine. Another is, you all know about this celebrity, he is Michael Jackson, and you know how good dancer was he. So he was a very good dancer, and he leaned against gravity while dancing. So that is considered as the signature step of his dancing, but the actual magic is inside his shoes. तो उनके shoes में there is certain kind of hook arrangement that helps him from falling on the ground. तो वो hook arrangement उनकी मदद करता था कि वो ground पे गिरे ना. तो उन्होंने उस टाइम पे, देखिए आप, ये कितनी पुरानी बात है, 1992 की, उस टाइम पे उन्होंने उस शूज का पेटेंट प्रोटेक्शन लिया था. सो इवन द सेलिब्रिटीज इन द डेवलप्ड कंट्रीज, उनको भी पेटेंट प्रोटेक्शन की नॉलेज है. दे नो अबाउट द significance of patents and intellectual properties. So now the basic requirement, as I told you, for getting a patent is novelty and inventive step. आपकी इन्वेंशन या तो नॉवल होनी चाहिए या उसमें कुछ इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए. नाउ इन्वेंटिव स्टेप से हमारा मतलब क्या है? हम सपोज कोई ड्रग है, ड्रग्स की जो इम्पोर्टेंस होती है वो उनकी सेल्फ लाइफ से होती है. सपोज आई हैव अ ड्रग ए, इट्स सेल्फ लाइफ इज विथ सेम कोर स्ट्रक्चर. उस ड्रग का कोर स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन उसकी सेल्फ लाइफ है मे बी 3 years. बट नाउ आई एम मॉडिफाइंग इट्स कोर स्ट्रक्चर. मैंने उसका कोर स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर दिया विद सम सॉल्ट. आई हैव सब्स्टिट्यूटेड विद सम सॉल्ट. Now the shelf life of that drugs, it is increased till 50 years. तो आप जब कस्टमर के पास ऑप्शन होगा उस ड्रग्स को खरीदने का, तो which now both are the function of both the drugs are equal. दोनों के functions equal हैं. Both are capable of treating same disease. Now which drug will be more eco-friendly? The one with more shelf life. So that is considered as inventive step. वो ड्रग्स जो कि सब्स्टिट्यूशंस की वजह से जिसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हुई है, वो एक इन्वेंटिव स्टेप कंसिडर किया जाएगा और दैट इज कैपेबल ऑफ गेटिंग पेटेंट. और वो पेटेंटिंग के लिए it can be filed for, it can get be protected under patenting. So now another case. So this is considered as inventive step. अगर किसी मॉडिफिकेशन की वजह से अगर आपकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है तो आप उसको इन्वेंटिव स्टेप के अंदर कंसिडर करते हैं और वो फिर पेटेंटिंग के लिए काबिल हो जाता है वो इन्वेंशन. नाउ अनदर थिंग इज टेक्निकली एडवांस. First thing under inventive step is economic significance, and second thing is technically advanced. Your invention should be technically advanced. It means there is some upgradation in the invention. For example, a very good example is there is, suppose, a device A, a mobile phone A. It has 3 features till now: camera, audio, video. Right? Now, if a person is creating a device B with one extra feature, then it is considered as technically advanced. Now you have seen different types of apps. So what do they do when they update their apps? So they are adding some new feature in those apps, and that app is considered as technically advanced. Now, in the same manner, if you modify, if you advancing the technology of a device, then it is considered as technically advanced.
Now recently Apple phone has filed a patent for the security system. Earlier, अभी आपने किसी भी मोबाइल में अभी तक एक फीचर नहीं देखा होगा कि जब भी हम टाइप कर रहे होते हैं तो द पर्सन जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू अस ही कैन पीप इनटू आवर डिवाइस, वो देख सकता है कि हम क्या टाइप कर रहे हैं. बट रिसेंटली Apple has come up with a new feature that the person cannot read what you are typing. So this feature is completely new and it is considered technically advanced because it is not there in any device till now. ये feature किसी भी device में नहीं है. तो it is capable of considering as inventive step and it can get protection under patent. ठीक है. अगर आप कोई नई चीज, नई advanced technology के साथ आ रहे हैं, now similar thing can happen in the case of drugs or cosmetics or creams, formulations, processes, purification methods. All these things can be applied in the similar manner in the with the case of chemicals also. So in short, in simple understanding, if you have ideas and you are expressing that idea, you have to protect it under copyright. Now, second thing is, if the idea is relating to the inventions and innovations, then it is protected under patents. Then if your idea is related to the quality of your work or identity, then it is protected under trademarks. And if the idea is related to the appearance, then it is protected under designs. These are the 4 core differentiation between the domains of the intellectual property rights. तो अगर आपका आइडियाज कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहे हो बाय पेंटिंग और स्कल्पचर्स, तो आप उसको कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्ट कराओगे. अगर आपके आइडियाज कोई इन्वेंशन से रिलेटेड हैं, कोई इनोवेशन से रिलेटेड हैं, तो आप उसको पेटेंट्स के थ्रू प्रोटेक्ट कराओगे. अगर आपके आइडियाज आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं, तो यू कैन वाया सम लोगो और सिंबल्स, तो आप उसको ट्रेडमार्क्स के थ्रू प्रोटेक्ट कराते हैं. एंड इफ योर आइडियाज इज रिलेटेड टू द अपीयरेंस, उसकी शेप कैसी होनी है, वो दिखने में कैसा होना है, देन इट इज प्रोटेक्टेड अंडर डिजाइंस. नाउ यू कैन हैव कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन this sector. The first thing is you can work as a patent agent. This is the private sector job. आप patent agent की तरह काम कर सकते हैं. Second, you have to qualify the test patent agent exam conducted by the government. आपको qualify करना पड़ेगा, then you can work as a patent agent. Then as in government sector, you can work as the examiner of patent and designs. Again, there are some qualifications that are required for sitting in the exam. For example, I am the examiner of patents and designs, so it can be in different field. For example, I have done masters in chemistry, so I am here who search for the patent novelty and inventive step in the field of chemicals or polymers also. Then engineers can also apply for this exam. We have electrical engineers, electronics engineers that are working as examiner of patents and designs. All you have to do is you have to qualify the exam conducted by the government. I think this is all about the career opportunities. Now I have a quiz for you, but before going to quiz, I need to precisely tell you about different features of all the intellectual properties, and I request the participants to answer the questions quickly. ठीक है, attentive होके बैठिए और फटाफट आंसर दीजिएगा. There can be multiple intellectual property. एक डिवाइस है, उस पे आपको मल्टीपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन मिल सकते हैं. जैसे कि एक सिंपल ले लीजिए, ये मोबाइल फोन है, ये MI का है. ठीक है, तो ये MI ने मैन्युफैक्चर किया है, तो ये सिंबल जो है MI का, इट इज प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडमार्क्स. इस सिंबल को ट्रेडमार्क्स के थ्रू प्रोटेक्शन मिली हुई है. देन द टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है
उसको पेटेंट्स के थ्रू प्रोटेक्शन मिली हुई है, जो टेक्नोलॉजी इस डिवाइस के अंडर है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट्स। देन इसकी शेप कैसी है, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, शेप, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय डिजाइन्स। नाउ देयर इज अ यूजर मैनुअल, क्योंकि हर डिवाइस की वर्किंग प्रोसेस अलग होती है, तो इनके साथ एक यूजर मैनुअल आता है, so that user manual is protected under copyrights. In the similar way we have pressure cooker over here, so जो इसकी shape है, the outermost appearance, it is protected by designs. इसका handle है, उसमें उसकी कुछ different shape है, that is protected by designs. Now there is whistles in this pressure cooker, actually two whistles and one more thing, so that is a technology. वो एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से there is improvement in cooking capacity, so that is protected by a patent. Then ये कुकर कौन सी कंपनी से, is it from Pigeon or is it from Prestige or some other company, so that company logo is protected by a trademarks, and then the booklet that comes along with pressure cooker is protected by a copyright. Now I have a quiz for you. You can unmute yourself and you can answer. Please unmute and answer the questions, or you can write in the chat box. Which intellectual property is there in figure 1? Figure 1 में कौन सी intellectual property है? Figure 1 में which intellectual property is there in figure 1? Participants can unmute themselves or you can write in the chat box. पहली जो पेंटिंग है वो मोनालिसा की पेंटिंग है, उसमें कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? प्लीज आंसर क्विकली, आई हैव टू वाइंड अप बिफोर 12. Am I audible, sir? Yes, ma'am. Yes, Okay, you are sir, audible. can you allow the participants to unmute themselves? Yes, ma'am. Okay. Okay. Any other answer? फिगर 1 में कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? आप इसको कहाँ प्रोटेक्ट कराओगे? Copyright. Yes. Then in figure 2, which IP is there? Answer quickly, please. Which IP is there in figure 2? Figure 2 में कौन सी IP है? It's the sculpture. So sculptures are which IP is there in figure 2? Is the screen visible? Yes, Is the yes. screen okay? Yes. So फटाफट आप आंसर दीजिए. फिगर 2 में कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? You can type in the chat box. मैम फिगर्स दिख नहीं रहे. Okay, I'm sharing the screen again. अभी दिख रहे हैं? अभी दिख रहे हैं फिगर्स?
हाँ दिख रहा है। हाँ, तो फिगर 2 में कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? कहाँ प्रोटेक्ट कराओगे आप? Geographical indication. स्कल्पचर, ये स्कल्पचर है। स्कल्पचर्स आर प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट। आर्टिस्टिक वर्क है ना ये, आर्टिस्टिक वर्क। तो आर्टिस्टिक वर्क को आप कॉपीराइट में प्रोटेक्ट कराते हैं। देन थर्ड, मैंने कहा था मल्टीपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो थर्ड में मल्टीपल आईपी। डिजाइन में क्या प्रोटेक्ट होगा? डिजाइन और ट्रेडमार्क। एंड वन मोर थिंग इज देयर इन दैट डिवाइस, ये एप्पल के डिवाइस, पेटेंट्स। द टेक्नोलॉजी इज प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट्स। ठीक है, ये लोगोस जो दिख रहे हैं आपको, ये साइन, ये ट्रेडमार्क्स के लिए है, एंड डिफरेंट कलर्स और शेप्स है वो डिजाइन्स में जाएंगी। देन फोर्थ वन, ट्रेडमार्क। yes. Now which type of IP protects the painting painted by artists? कौन सी IP में आप पेंटिंग्स को प्रोटेक्ट कराते हैं? कॉपीराइट में। Yes, Copyright. yes. So answer is copyright. Then what protects the intellectual property created by fashion designers? Fashion designers जो create करते हैं वो कौन सी intellectual properties होती हैं? रजिस्टर्ड डिजाइन। Yes. क्योंकि डिजाइनर्स आउटर मोस्ट एस्पेक्ट्स पे वर्क करते हैं, तो हम उनको डिजाइन्स के अंडर प्रोटेक्ट कराते हैं। देन किसी ने एडवांस्ड डिस्क ब्रेक बनाए हैं, तो इन्वेंटर अपनी उसको कहाँ प्रोटेक्ट कराएंगे एडवांस डिस्क ब्रेक्स को? इट इज अंडर पेटेंट्स। यस, पेटेंट्स। आप अभी साइकिल्स देख रहे होंगे, जैसे अभी रिसेंटली गियर वाली साइकिल्स चली हुई हैं, और डिस्क ब्रेक, पहले नॉर्मल ब्रेक्स आते थे। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है एक तरीके का, नॉर्मल ब्रेक से डिस्क ब्रेक पे आना। सो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी वो हम पेटेंट्स के अंडर प्रोटेक्ट कराते हैं। देन इनमें से ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस कौन सा है? BMW, पैठनी साड़ी, आयरनिंग मशीन, प्ले स्टेशन, WW। पैठनी साड़ी। पैठनी साड़ी। हाँ, पैठनी क्योंकि साड़ी। यस, पैठनी साड़ी। ट्रेडमार्क्स में हम किस चीज को प्रोटेक्ट कराते हैं? Logos, names and ब्रांड। यस। पेटेंट्स की टर्म्स बेसिकली 20 इयर्स होती हैं। आप जब पेटेंट्स लेते हो तो आप उसका प्रोटेक्शन उसको 20 साल के लिए करा मिल सकता है। उसके बाद वो पब्लिकली एनीवन कैन यूज दैट इन्वेंशन। ठीक है, इफ यू राइट ओरिजिनल स्टोरी, स्टोरी के लिए आपको कहाँ प्रोटेक्शन करानी है? स्टोरी। copyright. एनी अदर आंसर? स्टोरीज हम कहाँ प्रोटेक्ट कराते हैं? Copyright. यस, कॉपीराइट। नाउ कोई क्रिकेटर है, उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है, क्लोथ्स की कंपनी। तो हाउ ही रिप्रेजेंट कि वो क्लोथ उनकी कंपनी का है, वो किसका यूज करेगा इनमें से? कॉपीराइट का, GI का, ट्रेडमार्क। एनी अदर आंसर? ट्रेडमार्क। डिजाइन भी कर सकते हैं और ट्रेडमार्क भी कर सकते हैं मैम। ट्रेडमार्क्स। If a company develops a new technology that improves its main product, what type of IP they use to stop others from copying their invention? It's patent. Okay. Now this is all from my side. If you have any question, you can ask me. And if you need any further training, you can visit rgniipm.gov.in, or you can mail at rgniipm.ipo@nic.in if you need any further training in the field of intellectual property rights. This is all from my side.
If you have any doubt, you can ask me. Hello, ma'am. Can Yes, you sir. hear me? Yes, sir. I'm very happy to hear you with the Shahu College seminar with the Azadi Ka Amrit Mahotsav. I have written two questions in chat box. If you Okay, sir. see, Let, otherwise I will repeat it. let me check, sir. What is the difference between academic and industrial patent? Is there any difference? In academic And and if there is a industrial patent or commercial patent? sir, actually all the patents are granted which have the commercial use. So there is no such difference. Yeah. मतलब जिनका commercially आप जो applicable हैं आप उन patents उन्हीं को दिला सकते हैं. So we don't have something So, like academic or commercial. Okay. Very good, sir. Very good answer. So So next question is that related with this, most of times what happens, we are filing the patents and doing the academic score and filing the just the filing for the academic score only. It is not commercialized. What is the purpose? As per you said, the patent aim of the patent is like industrialization होना चाहिए, commercial होना चाहिए. yes, sir. Commercial Okay. होना तो चाहिए. ये Actually हो नहीं रहा है academic. सो आपका नोट क्या हो सकता है उसमें, आपका ओपिनियन क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए? Sir, actually applicant, this is more towards the applicant side, right? Why applicant is filing for the patent? Because he need to commercialize his idea, right? And we have one form, I don't know which form. The applicant has to submit that form in which he has to give the proof that his idea is still industrially applicable. I mean, he is manufacturing that invention or that work, so he have to prove that, and he has to renew. He have to show कि उसने इतना earn किया, और on the basis of he has to renew the patent. So for complete working of the patent till 20 years, there is one form that the applicant has to submit after 2 or 3 years. Only then the patent could be eligible to continue. Otherwise, it can be revoked. So this is more on. मैं क्या बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या हो रहा है, अभी पेटेंट फाइल करते हैं हम, पेटेंट मिल भी जाता है. यस सर. तो पेटेंट फाइल करने मोस्ट ऑफ टाइम, इससे पहले क्या होता था, हाई इम्पैक्ट फैक्टर रिसर्च पेपर में हम पब्लिश करते थे. यस सर. अभी आप पेटेंट करा रहे हो. तो हाँ, तो उससे यूज नहीं हो रहा है ना. अभी शिवाजी यूनिवर्सिटी का बात भी कीजिए, अब 10, 12, 15, 50 पेटेंट आ गए, लेकिन नॉट अ सिंगल पेटेंट कैन बी कमर्शलाइज्ड. सर एक्चुअली द कमर्शियल रूल मैंने बोला ना, यू हैव अ यूनिक कंटेंट. नो, यस, पेटेंट में यूनिक कंटेंट है, इसलिए तो उसका पेटेंट हुआ है. यस सर. सर बट देयर आई हैव डिस्कस 3 क्राइटेरिया इन माय स्लाइड कि वो इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल होना चाहिए. So is your project is industrial applicability, that you have to prove in the form. आपको वो फॉर्म भर के देना पड़ेगा, आपको दिखानी पड़ेगी उस फॉर्म में कि that idea is industrial applicable, and then your patent can be continued. आपने ये किया है? नहीं किया है मैडम कभी. मैंने पेटेंट कभी फाइल ही नहीं किया है, अब इसीलिए मैं पूरी तरह से यहाँ पे then you have to work on its industrial applicability and its commercial use. Yes sir. I think यानी कमर्शियल यूज करने के लिए हमें पेटेंट फाइल करने के बाद भी वो कमर्शियल है, ये प्रूव करना पड़ेगा. Yes, there is certain form, I don't know about that form, जो कि फिल करना होता है for the renewal of patent. Okay. Thank you. Any other question? And one more thing sir, जब भी हम कोई एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें यही देखते हैं कि क्या ये जो इन्वेंशन है, क्या ये पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल हो सकती है कि नहीं. अच्छा. यस सर. जैसे आप कॉस्मेटिक्स बनाते हो तो उसको पब्लिकली इफ यू कैन यूज इट और नॉट. What? Yes. So this is more towards the applicant side. Yes. Any other question? Is there any question from any participants? If
You can raise your hands and you can ask. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, sir. Hi. Yes. Actually, I have a question regarding time, or the question is why when we are going to fill a patent, then why it is taking so much time? Means 3, 4, and more than 3, 4 years. Sir, the process for examining the application will start when you file Form 18, right? And there is Yes. there is a timeline of 4 years from 4 filing your years. application till the filing for examination. It depends on you. So if you have filed the Form 18, which is for the examination of application, then Yes. it will take less time for granting, for the granting process, right? But if you are coming up with Form 18 after 4 years, because this timeline, then we will start the examination after 4 years. So it depends on you when you are submitting the mandatory forms. Second thing, sir, if you want your patent to be filed earlier or processed earlier, then we have a provision of expedited examination. Okay. You have to pay some extra fees, जिसमें आपका Yes. within 1 month, within 1 year, sorry, you all the processing for patenting from filing till granting can be completed in a year. Okay. In that case, you have to file for the expedited examination, and there are certain conditions for filing expedited examination. For example, only individual can file, then startups can file, then if one of the applicant is female, then you can file for expedited examination. So earlier, sir, we have less number of examiners, so they might have taken some long time for the examination or processing, but now we have enough employees in our department, so I don't think that it will take that much time. Okay. Thank you. Thanks. Any other question? Hello, madam. Yes, ma'am. Myself, Smita Pujari. Yes, ma'am. I want to ask a question. If I have discovered some shortcuts to solve accounts problems, shortcuts, can I get copyright? Which are not found in any book or internet. See, magic tricks or shortcuts that are considered as mental activities, and in our section 3, mental acts are excluded from patenting, but definitely you can go and file for their copyright. Okay, thank you. Any other question? I think we can conclude from here. So I believe all our dear participants have got clarification of their queries. Thank you, ma'am, for such an enriching and fruitful session. And we are grateful for the time and effort you took to share your experience. Thanks with us. Thank you so much. So to propose a vote of thanks, I invite Mr. S.A. Shinde, sir, the Assistant Professor of Chemistry. Hello, good afternoon, everyone. I'm here to express vote of thanks. On behalf of IPR Committee and IQAC, I'm here to share vote of thanks for all the participants, and especially today's resource person, Ujjwal Jaipal Singh ma'am, Examiner of Patents and Design, Patent Office, Mumbai. I express my gratitude towards resource person because today's resource person explained IPR in detail. What is the IPR, how the patent can be filed, and what are the types of IPR. So very, very detailed explanation, ma'am. Very, very thankful to you, and I thanks to all the participants, and thanks everyone. Thank you very much. If you have any doubt, you can
write my email address ujjwal.ipo@gov.in. You can post any doubt over there or you text me. I will be looking forward for your queries. I hope I will able to entertain your queries. So that's all Yes, from ma'am, my sure. side. It's very nice meeting you. Okay, I am sharing my email ID. Share link intellectual property. Just wait a minute. For forms and fees, this is regarding, sir, regarding the question of the form industrial applicability of the patent. I am posting the link for that. You can visit this. Website to check which form should be necessary for the proofing the industrial applicability of the invention. So this is all from my side, sir. Thank you. Okay, thank you, ma'am. All the participants are requested to fill feedback form for today's national webinar. Thank you very much. One more thing, sir. Our next session will be on fees and filing of the patents. How do the office works, like how do the granting of the patents work, fees and all structure. If you need any webinar on that, then we are happy to conduct it. Sure, ma'am. We will organize one more webinar on fees and how to file the patents. Thank you very much, ma'am. Thank you. मी काय केलं बघा.